Hello viewers, this is Ranjimi Himjoy and you're watching Prime Time in English. Now the news in details. On March 25th, the Naga Wrestling Association announced the 15 Open Naga Wrestling and the first Women's Open Naga Wrestling Championship set to take place on March 28, 2025 at Kocheze, Kohima local ground. NWA President Vivoli Kezo shared the association plans to uplift Naga wrestling and expand its reach across tribes in the state and beyond, aiming for national and international recognition, even in the Olympic Games. This championship will feature 129 wrestlers from 10 tribes, including Angami, Chagisang, Ziliang, and others. NWA also revealed plans to host the Asian Belt Wrestling Championship in Nagaland with the support of the state government. Naga wrestling will be recognized as an international event under UWW and IOC. Additionally, NWA will continue promoting Naga traditional wrestling annually while introducing Naga wrestling in the Open Championship for both men and women, aligned with United World Wrestling Standards. Today in this press conference, we want to highlight the program and also want to let the general public know about the plan of NWA for the uplifting of the wrestling, and also we want to clarify more about the system which is going to be implemented in the forthcoming 15th Open Naga Wrestling and first Women Open Naga Wrestling Championship, which is going to be held on 28 March 2025 at Kocheze, Kohima local ground. The Nagaland Wrestling Association, in its first General Assembly for the tenure 2024 to 28, which was held on 28 July 2024, has taken a historic decision that the Naga wrestling will be promoted and reach out to the other tribes in our state, those who are not yet practice Naga wrestling. Besides, it should be promoted even beyond the state, aiming to get national, international, and even to the extent of recognition in the Olympic Games one day or the other. As per the decision taken in the General Assembly, we have approached the leaders of the different tribes, and as expected, many of the leaders have come forward and started forming their wrestling association and also organize their wrestlers as well. The Nagaland Wrestling Association also gave our best in coordinating with them and giving them basic trainings. As a result, this is going to be the first time in the history of Nagaland Wrestling Association that in total 129 wrestlers, 100 men and 29 women from 10 tribes are participating in this Open Championship. The participating tribes are Angami, Chagasang, Ziliang, Lotha, Semi, Puchuri, Rengma, Chang, Ao, and Pom. The Nagaland Wrestling Association will give its best for this promotional drive till it reach to all the 17 tribes in our state. The second and the most important stand is to promote till its recognition as a sports event in the international arena and in the Olympic Games. By the grace of God and with the initiative of our Honorable Chief Minister Nagaland, Dr. Niphu Rio, and advisor to CM, who is also the Secretary General of Nagaland Olympic Association, Sri Abu Mehta, with the support of the state government,
and also with the participation of Nagaland Wrestling Association, the Asian Belt Wrestling Championship is in plan to be hosted by our state. As a hosting state, we have been given the opportunity that Naga wrestling will also be played as the main event in the championship, with the condition that if the Naga wrestling is to be recognized and to be played under UWW, that is United World Wrestling, and IOC, International Olympic Committee, as an international event, we have to be fulfilled the guidelines and the criteria set by UWW. Number one, should allow both men and women for participation. Number two, should be played in weight category. Number three, point system have to be there. Number four, to use wrestling custom in the competition. With all these conditions, we had a lengthy deliberation in our General Assembly about all the merits and demerits. And at last, everyone was agreed and decided that traditional Naga wrestling, which has its own value and its own uniqueness, will be maintained as it is, and the traditional Naga wrestling will be played in the main tournament of Nagaland Wrestling Association. On the other hand, considering the importance and benefit of our Naga wrestling to be recognized internationally by fulfilling the criteria set by the United World Wrestling, we have also decided to move ahead with what the condition they have given to us. This Naga wrestling for promotion will be played during International Hornbill Naga Wrestling Championship, Open Naga Wrestling Championship, National and International Naga Wrestling Championship. With all the mentioned reasons, we want to make it very clear to the general public that Naga traditional wrestling will be maintained as it is, and in the event of Naga traditional wrestling, women participation will not be there. This will be called as Naga traditional wrestling. The other one will be called as Naga wrestling. This nomenclature will be used for international recognition. This is the second time which the Naga wrestling system is going to be implemented. With all these clear visions, if we go hand in hand, our goal will be achieved sooner than later. The Nagaland Wrestling Association is seeking the support and cooperation from each and every community of the Nagas for this challenging journey, so that together we can do great things for the wrestling fraternity and bring. On March 25th, the AICRP on vegetable crops in collaboration with Atma Newland organized a one-day training program on sustainable crop production and pest management in summer vegetables with composting techniques at Town Hall Newland. The event was praised by Tebusa Nakro, District Agriculture Officer, who emphasized the importance of vegetable cultivation for food security. Professor Akali Sema from Nagaland University encouraged farmers to apply the knowledge gained for better production and livelihoods. The training included a session on pest management, composting, and summer vegetables crop production led by experts from Nagaland University. Dr. Ashwini Ananda, organizing secretary, urged farmers to use the training for local vegetables production to meet Nagaland's demand. The program was attended by farmers from all three blocks of Newland and concluded with a feedback session and the distribution of agricultural inputs.
On Tuesday, a woman in Uttar Pradesh, Ray Barley, got severe burn injuries after an acid attack-like substance was thrown on her face, allegedly by a neighbor. Ram Tulari is in a critical condition at the district hospital. The attack took place at a shop in Bastium village. Her husband Rajesh said she was harassed by the man at the shop, and when she tried to escape, he threw the liquid on her face. Police said the man Komal Gautam has been arrested based on the statement given by Ram Tulari. अरे मैं तो काम में चला गया था, मुझे समझ में नहीं था। उसने कहा मैं पर्ची मसाला लेने दुकान में गया, तो इसने छेड़खानी वो लक्ष्मण का लड़का किया, तो इसने कहा कि मैं भागने की कोशिश किया, तो इसने पता नहीं कहाँ मार दिया चेहरे में। मैं अंधेरिया गई थी, तो उसके बाद कहते मैं लुक गई तो मैं सुबह वही 4 बजे जब अजान नहीं होती तो मैं आई तो चुप पे उड़ के पहुँच गई तो सुबह उठा तो लड़की देखा, तेरे मुँह में क्या है सब, तो बताया सब सुबह। तो फिर पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, पुलिस। कल रात में एक महिला है 42 वर्षीय बछरावा थाना क्षेत्र, इनका कहना है कि वो दुकान गई थी कुछ मसाला वगैरह लाने गई और घर पे लौटी नहीं। सवेरे ये घर पे आई, इनका कहना है कि इनके चेहरे पर कोई तरलीय पदार्थ डाल दिया गया था। लगभग 10-10:15 बजे ये CSC जाती है, जहाँ से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर जा करके इनको जिला अस्पताल रेफर करके अच्छी इलाज के लिए पहुँचाया और इनका बयान के आधार पर जो है एक जो कोमल गौतम जो है पुत्र लक्ष्मण इनके पड़ोस का ही रहने वाला है, उसको पुलिस हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और साथ में ही इनके पति भी साथ में हैं, इससे एक तहरीर प्राप्त। Women in Delhi have praised the state budget presented by Chief Minister Rekha Gupta on Tuesday. The Rs 1 lakh crore FY26 budget focuses on 10 key areas, including Yamuna cleaning, women's economic empowerment, infrastructure, water and connectivity, aiming to make Delhi self-reliant. Women particularly appreciated the step taken for safety, education and farmers. The government has allocated Rs 100 crore for new CM Shri schools and Rs 500 crore for an education hub in Narela to strengthen Delhi's education infrastructure. The budget also includes financial support for farmers under the BM Kisan scheme. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बजट दिया है वो पिछली बार से बहुत ही अच्छा निकला है। बहुत ही मतलब हमें बहुत खुशी मिली है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो भी परेशानी आते से गलियों में जो हमारे शहरों में जो कैमरे लगे होते हैं, पहले भी लगे थे और अब और ज्यादा बढ़ के लगेंगे, ताकि ये जो दुर्घटनाएं होती है महिलाओं के साथ या जेंट्सों के साथ भी होती है तो वो चीजें कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। एजुकेशन पे और जो किसानों के लिए हुआ है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एजुकेशन में तो बहुत जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट के बच्चों की पढ़ाई को लिखाई को लेके पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और एक 10 लाख तक का बीमा है। We'll be right back after a short break. Keep watching Nltv. Welcome back. Now the next news.
The Tripura Legislative Assembly saw a walkout by the opposition on Tuesday after the Speaker refused to ask Parliamentary Affairs Minister Radan Lal Nath to apologize for his racial remarks against leader of opposition, Jitendra Chaudhary. Nath had made comments during a counter to corruption allegations on Monday. Chaudhary demanded an apology, but the Speaker rejected it, leading to the opposition protests and walkout. Chaudhary plans to move a privilege motion against the minister. Family were Antudaya, that is below the poverty line, and he feel very proud for that. Then countering that statement, the Honorable Parliamentary Affairs Minister, he just abused me saying that Jiten Babu তিনি তার জাত চিনাইছেন, that Jiten Babu, he recognized his tribe. By that, making such a very derogatory and racial comment, he has not only abused myself, my family, but against my entire community. So, that issue today, from our bench, we raised before the House and sought the intervention of the Honorable Speaker that please ask that particular member, that minister, to tender apologize. But very unfortunate that Honorable Speaker himself was defending him. So we have to register our protest. We have walked out from the House. And this is the incident, how this House is being polluted under the hand of the BJP during last couple of years. I submitting the privilege motion today itself, now itself, against these racial comments of the minister, against myself, my family and my community. The Lok Sabha passed the Boilers Bill 2024 on Tuesday, which aims to replace the outdated Boilers Act 1923. The bill, which had already been passed by the Rajya Sabha in December, decriminalizes 7 offences and promotes ease of doing business. It also ensures boiler safety, maintains qualified personnel for repairs, and removes redundant colonial era provision. Commerce Minister Piyush Goyal assured that the state bars are not affected by the law. The opposition walked out during Goyal's reply, criticizing the previous government for delaying the bill. एक ऐसा कानून लाए जिसमें रिडंडेंट या ऑब्सोलीट जो आज के परिप्रेक्ष्य में जिसकी जरूरत नहीं है उनको निकाल दिया गया, उन अनुच्छेद को निकाल दिया गया, चैप्टर्स और प्रोविजंस को बड़े व्यवस्थित तरीके से रिक्लासिफाई किया है, तो रीडेबिलिटी अच्छी है, समझना सरल है। सिर्फ 4 प्रावधान जहाँ क्रिमिनल एक्शन है वो रखा गया है क्योंकि लोगों की सेफ्टी, वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए बाकी सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब सिर्फ यह पावर्स रखे हैं कि राज्य सरकारों के साथ मिलके अच्छी तरीके से बॉयलर्स की व्यवस्था को हम निरीक्षण कर सकें। सरल कानून, पढ़ने में आसान, उसको लागू करना आसान हो और लोगों के जीवन में तकलीफें कम हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा कानून माननीय मोदी जी की सरकार लाई है। मुझे लगता है हम सर्वसम्मति से इसको पारित करें, ऐसा मेरा सदन से अनुरोध है। जैसा मैंने कहा कि गुलामी की माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट को, पुरानी सोच को, पुराने तौर तरीके को बदलने के लिए, अफसरशाही कम करने के लिए जो हमारा मूल सोच है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार देश को प्रोत्साहित करते हैं कि हम सबको 140 करोड़ भारतवासियों को मिलकर एक आधुनिक भारत, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत
2047 तक बनाना है, और वो तभी संभव है जब पक्ष विपक्ष हो, सत्तारूढ़ पार्टी हो, विपक्ष हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, हम सब विश्वास के ऊपर हमारे उद्योग जगत के साथ विश्वास से अपना रवैया रखें। कुछ मान्य मित्रों ने कहा कि हमने राज्यों के पावर्स को छीन लिया। हमने कोई बदलाव इसमें नहीं किया है राज्यों के पावर्स में। सिर्फ और सिर्फ वेल नोन मैन्युफैक्चरर जो प्रावधान पहले से केंद्र सरकार के पास था, सिर्फ और सिर्फ वो केंद्र सरकार के पास है। बाकी इसके सभी प्रावधान राज्य सरकार ही लागू करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं और सभी इसके प्रावधान राज्यों के हाथों में दिए गए। सभी स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करने के बाद ये बिल लाया गया है। इसमें राज्य सरकार के पावर्स को किसी प्रकार से टच नहीं किया गया है और छोटे लोगों को और सुविधाएं दी गई है, उनके लिए सरलता रखी गई है, प्रोसीजर्स को सरल किया गया है और सेफ्टी को सर्वप्रथम चिंता की गई है। मुझे लगता है आज पूरा देश चाहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये आज देश की धारणा बन चुकी है। आज ये समय की मांग है और इस समय की मांग के साथ मोदी जी देश में बड़े बड़े परिवर्तन। Adarsh Upadhyay died in Uttar Pradesh, Basti on Tuesday evening after allegedly being beaten by police. Tension rose in Ubhai village as the family claimed he died from police assault. Adarsh had an altercation with Ashok Gupta over tobacco and was taken by police after Gupta called him. The family alleges police demanded a bribe for his release and beat him in custody. Adarsh's condition worsened and he died after being taken to the hospital. 2 constables have been suspended and an investigation is underway. शाम को लगभग 4 बजे के आसपास टीआरबी को एक सूचना सीएससी हरैया से प्राप्त हुई, जहां पर एक किशोर जिसके अस्पताल से रेफर किया गया था उसकी मृत्यु के संबंध में सूचना थी। इस संबंध में जब मौके पर पुलिस पहुंची, परिजनों से बातचीत हुई, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक दिन पूर्व थाना दुबोलिया में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, वहाँ एक भाई गाँव है, वहाँ पर किसी घटना के सिलसिले में पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की गई थी। परिजनों का ऐसा कहना है, उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की गई। 2 आरक्षी जो थाना दुबोलिया से संबंधित हैं, उनका नाम प्राथमिक तौर पर परिजनों द्वारा बताया गया है, जिनके संबंध में तत्काल प्रभाव से उनको लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो भी आरोप प्रत्यारोप है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना किसी विधिक कार्रवाई के, बिना पंचायतनामा या पोस्टमार्टम की कार्रवाई के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो संभव नहीं है। हम नियमानुसार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर पैनल विद वीडियोग्राफी से कराएं। जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी अन्य चीजें सामने आती हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। ये 4 सिपाही आए थे, तो 2 सादे ड्रेस में थे और 2 ड्रेस में थे। किसी का नाम पता?
ये शिवम थे और एक और कौन नाम था वो जानकारी नहीं है। और साहब कह रहे हैं कि हम बुला रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ क्या क्या लेके गए 3 बजे, उसको रात बिरात मारे होंगे, रास्ता मारे होंगे, कब मारे हैं आज 4 बजे या 5 बजे उसको नहीं, उसको कौन मारा है? सिपाही लोग मारे होंगे और कौन मारा है। तो फिर आप यहाँ लेके आए सीएससी पे? तो यहाँ लेके आए तो यहाँ से ये रिफर कर दिए बस्ती दिए, कुछ दूर गया बस वहाँ। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग हमारा यही है कि बस जो देखना है वो अपना सब देखे। क्या बताऊँ सर, वो गया था गाय चराने, वहाँ सूटी मांगने में कोई विवाद हुआ है। किससे विवाद हुआ था? एक हमारे गांव के सेठ थे बनिया, वो काम से कम सुनते हैं, वो सूटी मांगे और ये वो सुनता नहीं है, उसी पर विवाद हुआ है, उसकी खातिर झगड़ा हुआ। ये गए थाने पर से आज 4 बजे यहाँ से आए हैं, 2-2:30 बजे 3 वहाँ से लाए यहाँ खून का उल्टी। In North Delhi, a 16-year-old boy was abducted and killed for a rupees 10 lakh ransom in the Wazirabad area. According to the police, 3 juveniles have been apprehended in connection with the murder. The class 9 student was taken to a deserted area near Balswa Lake, where he was stabbed multiple times. Later, a call regarding a ransom of rupees 10 lakh was received by the victim's family. इसी गली के पीछे गली के पता नहीं बच्चे से क्या गाड़ा है, मुझे नहीं पता। परसों शाम को गया मेरा बच्चा, संडे को 7:30 बजे। 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद पता ही नहीं लड़के का मेरे का। घर से ही बुला करके ले गए थे? फोन आया था कि बाहर आ जा, पूछते थे बस। आज शाम को क्या जानकारी मिली? आज शाम को फोन आया आपके पास? उन्होंने बोला कि बस जगह बताई थी, वहाँ आ जाओ। उसके बाद मुझे नहीं पता। आप लोग वहाँ गए? मुझे देखने नहीं दिया। कोई फोन भी आया था पिता के पास? क्या 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मार देंगे। आज भी पूरे दिन पुलिस लग रही थी, हर जगह से लग रही थी। शाम को 5:45 बजे मेरे पास फोन आता है कि बलसवा डेयरी के पास, बलसवा झील के पास आ जाओ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ जाकर मैंने देखा बच्चे की दादी इतनी बुरी तरीके से कर रखा है, चक्कू वक्कू गला काट रखा है, कि बुरी तरीके से मार रखा है। कुछ ऐसा भी है कि टट्टी करने की कोशिश की थी, गला काफी ज्यादा, गला आधा कटा हुआ पूरा ऐसे करके बच्चे की गर्दन। In Uttar Pradesh, Bijnor, a man and kid in conspiration with his friend of killing his wife was arrested. During interrogation, Ankit confessed to the crime that he conspired with his friend to get his wife run over by a car. He said that he was married for 5 years but did not have any children, and because he wanted to marry his sister-in-law. He plotted the murder with his friend and admitted that the accident was staged. On March 8, Ankit left his wife Kiran standing on the roadside while he went to a petrol pump to refuel his bike. Then a car ran over Kiran and fled. Her family suspected foul play and accused Ankit of murder. Upon reviewing footage from CCTV cameras in the areas, police identified the owner of the car as Sachin, a friend of Ankit. Police recovered the car used in the crime. दिनांक 8 मार्च को नगीना कस्बा निवासी अंकित कुमार ने नगीना देहात थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया कि अज्ञात इको वाहन के चालक ने तेज़ और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु कारित कर दिया है। अभियोग पंजीकरण के पश्चात पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों को एकत्र किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते की किसी अन्य महिला से वो शादी करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साथी सचिन, जो इको वाहन का चालक था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था उसने।
विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन से ये तथ्य प्रकाश में आए और जिस वाहन से मुकदमावादी ने अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था वही को वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और दुर्घटना में जो अभियोग पंजीकृत किया गया था एक्सीडेंट का उसको Delhi police arrested 2 persons for allegedly scamming people through social media platforms in the name of investment. The accused Suraj Kumar Gujar, 20 years, and Rahul Kumar Gujar, 22, lured victims with promises of higher returns. More than 10,000 people were duped. The case came to the light after a complaint was lodged on the National Cybercrime Reporting Portal regarding a fraud. A team traced the suspect using call records and money trails, and raid was conducted on March 20 in Chittorgarh, Rajasthan, leading to the arrest of Suresh and Rahul. During interrogation, Suresh revealed that he created multiple social media accounts to promote fraudulent investment schemes. The accused lured victims through reels and directed them to groups where they were pressured into making investment. Initially, small profits were shown to gain trust, after which victims were coerced into investing larger amounts. 2 mobile phones were recovered from their possession. साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का 2 साइबर क्रिमिनल सिंडिकेट्स को बर्स्ट किया। नंबर फर्स्ट है एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम वाया टेलीग्राम चैनल्स। इसमें 2 लोगों को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आउटर नॉर्थ ने गिरफ्तार किया। एक है सुरेश कुमार गुज्जर, एज 20 इयर्स, ये राजस्थान का है। दूसरा है राहुल कुमार गुज्जर, 22 इयर्स का है, ये भी चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है। कंप्लेनेंट हमारे पास आता है तो हमने एनसीआरपी के कंप्लेंट से थ्रू रजिस्टर करते हैं। फिर हमने एक टीम बनाया जिसमें टीम है हमारे इंस्पेक्टर रमन है और सब इंस्पेक्टर विशाल है, एएसआई वेद प्रकाश, हेड कांस्टेबल विजय, हेड कांस्टेबल पंकज, हेड कांस्टेबल संदीप। ये सारे टीम ने फिर इन दोनों एक्यूज को ट्रेस किया। ये दोनों को फिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनको गिरफ्तार किया। फिर अभी ये बाकी जो नंबर्स जो है इनको अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहे हैं। और अभी इन लोगों ने एक्यूज ने अपना कन्फेशन में बोला कि 100 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने फ्रॉड किया है। तो अभी हम I4 से भी हम लिंक 3 Indian Reserve Battalion (IRB) Jawans were arrested on Tuesday for possession of cannabis in Odisha. Both the cannabis was seized from the IRB barracks under Manmunda police station in district. Both police, after receiving information from sources, conducted a surprise raid in the barrack and seized 15 kg of cannabis. Further investigation is underway, and as per information, the cannabis cultivation in Port and Kandhamal areas is being harvested in a month of the year. In Maharashtra, Aurangabad, 5 Naxals belonging to the banned outfit Jharkhand Jan Mukti Barishat were arrested by Bihar police on Tuesday. A catch of arms and ammunition including 315 bore rifles, a country-made rifle, 13 cartridges, a walkie-talkie set, 7 camouflage uniforms and several others incriminating items were seized from the possession. According to a statement issued by Bihar police, the arrested operatives of JJMP have been identified as Baliram, Krishna Bal, Mithilesh Yadav, Naresh Ram and Chotu Singh, with the first 4 as natives of Aurangabad district. जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि औरंगाबाद पुलिस के द्वारा एसटीएफ और एसएसबी के संयुक्त छापेमारी के दौरान हम लोगों ने कुल 8 नक्सलियों को और 5 हथियार को, भारी मात्रा में हथियार और गोली को बरामद किया है। कुल 8 नक्सलियों की पहचान हुई।
शुरुआत में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। उस समय हमारे पास सिर्फ कुछ सामान ही बरामद हो पाए थे, हथियारों की बरामदगी नहीं हो पाई थी। जो सामान बरामद हुए थे उसमें नक्सलियों से संबंधित लिटरेचर था, भाकपा माओवादी का लेटर हेड मिला था, लेवी जो पूर्व में मांगा गया था उससे संबंधित हिसाब का बही खाता मिला था। ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी, लेकिन किसी तरीके का हथियार प्राप्त नहीं हो पाया था। तो उन लोगों को परसों गिरफ्तार किया गया था और कल जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में कल हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और उनके बाद जब रात में उनके निशानदेही पर छापेमारी की गई है तो हमारे पास कुल 4 बड़े हथियार जो लंबी रेंज के देख रहे हैं बड़ा हथियार है, ये बरामद हुआ है। एक 3 नेट बरामद हुआ है, 12 गोलियां बरामद हुई हैं और एक 7.6 mm का अलग से एक गोली बरामद हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस से चोरी किया गया या फिर लूटा गया एक मैन पैक बरामद हुआ है। कुल 7 चितकबरा जो कपड़ा है ऊपर नीचे का पहनने का, ये भी बरामद किया गया है। इनके पास से TSPC का और झारखंड जन मुक्ति मोर्चा परिषद इसका भी लेटर हेड बरामद हुआ है। भाकपा माओवादी का लेटर तो बरामद हुआ ही है। कई लोगों से जो पूर्व में इनके द्वारा लेवी मांगी गई है उसका बही खाता मिला है जिसमें लेवी का अमाउंट। In Uttar Pradesh, police on Tuesday arrested 6 persons in connection with the murder of BJP leader Gulfam Singh Yadav, who was allegedly killed with a lethal injection. Superintendent of Police Krishnan Kumar Bishnoi said that Mahesh Yadav, Gram Pradhan of Mantil village, and his son Ravi Yadav quarreled with Gulfam Singh during the MLC election. The incident occurred on March 10 when Gulfam Singh Yadav, 60 years, was at his village farm and 3 unidentified men arrived on a motorcycle and injected him with a poisonous substance, police say. Gulfam Singh Yadav was planning to move a no-confidence motion against Pramukh Ravi Yadav, due to which this incident was planned and executed. In this case, Mahesh Yadav, Ravi Yadav, Vikas Yadav, Mukesh, Ramniwas and Sudhir have been arrested and sent to jail. 10 मार्च को दोपहर 1 बजे एक व्यक्ति गुलफाम सिंह यादव जो पहले यहाँ पे गुन्नौर सेक्टर के रहने वाले हैं, दफ्तरा गांव में उनको इंजेक्शन मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची थी। उसके बाद में इनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में पुलिस द्वारा वहाँ कैमरे चेक किए गए, विभिन्न एविडेंस कलेक्ट किए गए और आज कुल 15 दिन बाद में पुलिस के द्वारा उस सनसनीखेज इस हत्याकांड का खुलासा जुनवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। महेश प्रधान और उनके बेटे जो ब्लॉक प्रमुख है रवि, इनका मोटिव जो हत्या करवाने का ये था कि पहले एक बीच में MLC के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कहासुनी हुई थी गुलफाम के और जो मेडोली प्रधान महेश है इनके बीच में, और अभी जो ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, इन 2 कारणों की वजह से इन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसको देखते हुए इन्होंने गुलफाम सिंह की हत्या करने का निर्णय लिया और उसके बाद में इस हत्या को सफाई से करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी भी ना मिले, इसलिए इन्होंने इस तरीके की एक मैकेनिज़्म निकाला कि 5 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मतलब डेथ हो जाए और इसको इस तरीके से हो कि ये लगे भी ना कि ये पॉइजनिंग भी ना लगे। इसके लिए उन्होंने इस तरीके के केमिकल का उन्होंने पता लगाया। पुलिस के द्वारा जब इस व्यक्ति मुकेश को गिरफ्तार किया गया तब पता चला कि इन पूरी जो घटना है इसके बारे में। और In Bihar, on Monday, 3 people were shot at Ara railway station. According to the police, the victims, a 16 and 17-year-old girl, her father, was shot at by a young man who later shot himself. The police arrived at the scene shortly after the incident was reported, but the exact motive behind the killings remain unclear. However, police suspect love angle. Local authorities have launched an investigation into the tragedy, though no arrests have been made till now. Parliament on Tuesday passed amendments to the Disaster Management Act 2024 with Home Minister Amit Shah asserting that there will be no centralization of powers of discrimination with states in handling disaster.
Replying to the debate on the bill in the Rajya Sabha, Shah launched a sharp attack on the Congress party past management of the Prime Minister's Relief Fund, alleging a lack of accountability and transparency during the previous UPA regime. माननीय आपदा प्रबंधन का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग में कंकरन लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता करी कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को, सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें न केवल केंद्र सरकार, न केवल राज्य सरकार, पंचायत और हर एक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। ये पूरा विधेयक अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। I shall now put the clause 1 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 1 as amended is adopted. The enacting formula stands part of the bill. There is one amendment. Shri Amit Shah ji, are you moving the amendment? मैं प्रस्तुत करता हूं। Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the enacting formula as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula as amended is adopted. The title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The title is adopted. Shri Amit Shah ji to move that the bill as amended be passed. मान्यवर जी, मान्यवर मैं संशोधित विधेयक प्रस्तुत करता हूं। Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended. Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Tuesday announced her plans to shift Tihar jail to the city's outskirts while setting aside rupees 10 crore in the 2025-26 budget for survey and consultancy services related to the shifting of the jail. Established in 1958, Tihar jail is one of India's largest prison complexes, comprising 9 prisons spread over more than 400 acres, 1% in Rohini and 6% in Mandoli.
The 37th Sports Meet of Baptist High School Tening commenced today, March 26, at the school ground, with Lung Choi, chairperson of Town Council Tening, gracing the occasion as the special case. The event featured a parade by 4 contingents from the primary section, special performances by girls hostelers, and an exhibition match between upper school teachers and down block teachers. Lung Chui encouraged students to work hard, be sincere, and dedicate themselves to their studies, while the oath taking ceremony was led by sports teacher in charge, Ngam Pupo. Punjab Finance Minister Harbal Singh Chima on Wednesday presented a Rs 2.36 lakh crore FY26 budget for the state, focusing on tackling drug menace and the health sector. During his budget speech, Chima talked about AAP-led Punjab government's anti-drug campaign to check drug sources. Chima said the Punjab government is going to carry out the first ever drug census in Punjab to understand the prevalence of drugs, usage of and addiction centers, etc. He also said Chief Minister Bhagwan Man's visionary leadership has been the driving force behind Punjab's remarkable progress over the past 3 years. ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, मैं वित्तीय साल 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਰਮਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ 2.51 ਅਤੇ ਸਰ 3.84 ਜਿਹੜਾ 3.84 ਹੋਣ ਦੀ ਸਰ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਝ ਅੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਰ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਹੁਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਸਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਫਸਟ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ
ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ A one-day block-level community mobilization program for SMTCS and SMCS was organized by the Department of School Education, Nagaland, Samagra Shiksha and the Lighthouse and Nectar. The program was chaired by Ed Eden under Dobu Subdivision Block. The program began with highlighting the importance of the program by Lialo Abon, Principal GHSS Dobu and STEO in charge Dobu Block. The resource person for the program were Vizole Chucha, Joint Director, Dos Rukuzo Hoshi, State Coordinator, Samakra Shiksha, and Noknye P3, District Associate Nectar Mon. Class 5, hobi 6, hobi pass hobi the last certificate to yete jejabo. Inega la jase. To itula problem do ki ase amakan Nagaland de khali ekta district noy sob district te ase itu laga khatom hogina thakibo laga itedi beshi komti manu porigina ase do aji tok tu alop uthigina thakibo bole bi 16 March tok tu 100 majude 27 hi hogina ase to alag states kan itu all over India ase alag states kan tu 97% punji jaise 100 majude 97 to khatom hoise tinta hi bajigina thaka laga ase amagan Nagaland do khali 27 hi hogina ase itu bishi slow ho jise dosra problem thakili pare holibi ekta problem do amakan itu alop amakan nagamano kan itu daw pora laga enega bi hogina thaka labi huni pa ase amakan first adam de enrollment hodam de itu tu thik da hobo kone bishi manu register kore nai do तो इतु निशना इतु भी इतु हिसाब से होगा ना कि निगम भावना थकी ऐसे कोई ना होनी पास है तो इतु लगा कोरेदन दे since बच्चे खान तो छोटो आसे minor आसे इतु कारणे parents खान लगा permission consent इतु लगे तो इतु consent लगे दो parents खान ला आधार नंबर भी लगे इन्हें का होबरा तो की आसे हो कोई ना parents kan bi bishi doubt hogina ase koise ole bi itu inega laga na hoide itu tu amakan records kan pura yede jabo to ki sal hole bi na hara hoide do inega hoina class 12 pass hobo college te bi jadam debi itu chulai jabo ide do kila mane sob records te jaise to example आजिकल मैट्रिक एग्जाम दिखना से तो दिए आगे दे अपना न्यूज़पेपर दे साइट है कि बोले लॉस नोटिस भी ऐसे दिखे बदे कि ला लॉस नोटिस एडमिट कार्ड हराई से गुना तो ताई कान की करने हराई से गुना न्यूज़पेपर दे दिया से itu aro jagina nutun apply koribone karne ase itu haraise koise bole police station jagina FIR itu haraise gona report itu banabo lage to itu ase to itu neighbors khan hole bosti de komba daw thakise bole itu bal bar kogina joldi kore dibo lage ekta point ase India states aro union territories kan sob thaga do Nagaland laga do sob se niche phale ho jise ekta problem do amakan school te bacha class 2 tok do puribo kiba hobo lagna government laga policy ekbar change kori gina itula implement kore ase puribo le na pare aro inko bi 2 plus 2 2 into 2 iniga basic kan bi na pare holaga amkan students iniga choto class kan ina hoje hole bi class 2 tok itu kan choto pare bo lage aro ekta to puri bole pare itu ekta kotha ase puriele bi ki puri ase na bujhe itu bi alag kotha ase itu karone learning with understanding learning what he is reading ine hobole taki puri ase bujine puri ase khali puri bole pada la noi ineka hobola laga program ase dei itu laga to itu kori ase class 1 to 3 laga saise bole yate sabo mon laga do 15.45
सबसे नीचे वाला भी नहीं बोले भी तो कमती हो जैसे अलग डिस्ट्रिक्ट का ऊपर कोई बोले लेकिन पूरी बोले दिग्गज पाइना थे कल पढ़े नवेले इनको गान पूरी बोले दिग्गज पाल लगा था कि भी पढ़े क्लास 1 to 3 सब्जेक्ट itu kan program. A dramatic incident occurred near an air base in northeastern France on Tuesday when two Alpha jet planes from the French Air Force's aerobatics team collided in mid-air. Fortunately, 3 people, 2 pilots and 1 passenger, ejected safely and were found conscious, according to the military. 1 person suffered multiple injuries and emergency services were quickly mobilized to respond to the incident. Defense Minister Sébastien Lecornu confirmed the incident on social media, stating that emergency services have been deployed. President Donald Trump on Wednesday praised India for tying voter identification to a biometric database, enhancing security and accuracy of their elections. Trump, in his address, raised concern about potential vulnerabilities as the United States largely relies on self-attestation for citizenship. Additionally, Trump advocated for a return to paper ballots, arguing that they offer a more secure and transparent method for casting votes. This is all for now in English Prime Time. For more news and updates, keep watching Nltv. No, no, go ahead. Face, क्या करा